Hello everyone, welcome to Nucleus Education. Let's start the topic. We have to calculate the gravitational potential. That is, we want to bring the unit mass towards the point P, which is inside the solid sphere. तो हमारा टास्क है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इट इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इस डेरिवेशन में वी विल ब्रेक डाउन दिस डेरिवेशन इनटू टू पार्ट्स. First of all, we will bring the unit mass from infinity up to point capital R. That is the radius of sphere. And then from capital R, we will find till the small r. So, इसको integration में we will use limits. So, gravitational potential एक scalar quantity है. It is the amount of work done and required to bring the unit mass. यूनिट मास को यहाँ तक पी पॉइंट तक पहुँचाने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगेगा, इसी की कैलकुलेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एंड वी आर ब्रिंगिंग द यूनिट मास इनसाइड द स्फीयर फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द स्फीयर. एंड इट इज़ अ सॉलिड स्फीयर, इट इज़ नॉट hollow. It is the gravitational intensity inside this sphere is not zero because it is not hollow. So let's start with the derivation हमने इंटीग्रेशन से करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की इंटीग्रेशन करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एज यू कैन सी एक पार्ट इन्फिनिटी से r है, दूसरा पार्ट कैपिटल R से स्मॉल r है. So E represent gravitational intensity and use the formula gm by small r square. This is the formula when the unit mass is outside, and gm small r by capital R cube. This is the formula when the small mass is inside for gravitational intensity. अब हमें इसको इंटीग्रेशन करनी है. इंटीग्रेशन जब करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये भी हमें शो करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन dr ऑन बोथ द साइड्स. नाउ वी विल इंटीग्रेट. अब 1/r² की इंटीग्रेशन -1/r होती है. एंड यू शुड नो बेसिक्स अबाउट इंटीग्रेशन. आप कोई भी छोटी सी यूट्यूब में वीडियो देख लो रिगार्डिंग इंटीग्रेशन. एंड कैपिटल G एंड कैपिटल R कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं हम. सिमिलरली ऑन द अदर साइड आल्सो कैपिटल G, कैपिटल M एंड स्मॉल r कैपिटल R क्यूब आर कांस्टेंट. एंड देन वी विल इंटीग्रेट स्मॉल r ओनली. एंड स्मॉल r की इंटीग्रेशन r²/2 होती है. नाउ यू कैन पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. You will get the final answer. I hope you understand the topic. If you need any help regarding physics, chemistry, math, class 10th, class 11th, class 12th, you can contact me. Alright, take care, God bless, keep studying.